So today we are going to discuss a very important topic, that is sustainable development goals. So after completion of MDG, there are certain issues and problems that is prevailing and facing why our world community as a whole, and that these problems can be summarized under 17 goals of SDG, which is taken into consideration by UNO in the September 2015, only after Addis Ababa action, where the member of 193 countries came together to achieve these goals by 2030. And all these 17 goals target the all critical issues for four major domains, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. And there are 17 goals, 169 targets, and 247 total indicators, and 231 active indicator, you can say active indicator. And the objective of these goals that to achieve a better and more sustainable future for all people and world by 2030. So our first goal is no poverty. No poverty. There are 7 targets, 13 indicators. So our first goal is no poverty. There are 7 targets and 13 indicators. And targets talk about, so eradicate extreme poverty by 2030. पॉवर्टी को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि अगर 1.95 से नीचे अगर कोई कमा रहा है उसको हम पुअर कंसीडर करेंगे. एंड टॉक अबाउट ऑल टाइप ऑफ पॉवर्टी को हमें ख़त्म करना है 2030 तक. सोशल असिस्टेंसी प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. सो हम कुछ डेटा को देखते हैं. इन 2015 736 million people living in extreme poverty. In 2020, number decreased to 721, and in the time of pandemic 119 to 126 million people added in the poverty, especially from South Asian countries and African countries. And it is estimated that in 2030 the number decreases to 60 million people. If we talk about the total poverty, in the sense of total poverty, in 2015 10% of world population live under poverty. In 2030 the number is estimated, the number decreased to 7.3%. अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो 5.1% पॉपुलेशन गरीबी में रह रही है. रूरल एरियाज 17.3% पॉपुलेशन was living under the poverty. अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करेंगे 33.5% फीमेल्स जो है पॉवर्टी में रह रहे हैं. मेल की अगर बात करें तो ये नंबर 28% पर आ जाता है. अगर हम सोशल असिस्टेंसी प्रोग्राम की अगर बात करें तो 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स अंडर द सोशल असिस्टेंसी प्रोग्राम. मतलब किसी भी तरह की कोई भी एक सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम के अंदर कोई ना कोई आता है. इन 45% में से 85% जो बिलोंग करते हैं वो डेवलप्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं. एंड 45% में से 13% बिलोंग टू South Asian countries, African countries, and American countries, and Mexico. So let's move on our second goal, that is zero hunger. So there are 8 targets and 14 indicators. Targets mainly about nutritional food, sustainable agriculture, generic diversity of crops, uprising the agro technology, investment in vegetable and food. स्पेशली इसमें जो मंडियां हैं और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बात की गई है. सो लेट्स सी सम स्टैटिस्टिक. सो इन 2015 to 22.4% of world population live in hunger. In 2020 the number increased to 25.9% due to the pandemic. They are especially from Latin American countries and the African countries. In 2030 it is estimated that number
शुड बी डिक्रीज टू 15.2। और अगर हम हंगर की बात कर रहे हैं तो जो रिप्रोडक्टिव एज में वुमेंस होती हैं, 3 वुमेंस अगर रिप्रोडक्टिव एज में हैं तो उनमें से एक जो है वो एनीमिया की शिकार होती है। अगर हम चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें, मतलब एवरेज एज के हिसाब से एवरेज हाइट में कमी, सो इन 2015 24% ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस। इन 2020 नंबर डिक्रीजेस टू 2020। अगर हम ओबिसिटी की बात करें, चाइल्ड ओबिसिटी की बात करें, so 29 million child are suffering from the problem of obesity, and they are mostly from the developing countries urban areas. So let's move on upon third goal, that is good health and well-being. So there are 13 target and 28 indicators. So what do we mean by good health? So good health means free from mental and physical illness, and well-being means in a state of health, comfort and healthy and happy. Okay, so जो मेजर टारगेट्स हैं वो बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की, चाइल्ड मोर्टेलिटी की, एंड सर्टेन प्रिवेलेंस डिसीज जो डेथ का काज बनती हैं, एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, एंड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम स्टेटिस्टिक की बात करें, तो अगर मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट की बात करें तो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ 1 लाख वुमेन में से 350 प्लस वुमेंस की डेथ हो जाती है इन अफ्रीकन कंट्री। दैट इज़ वेरी मच हॉरिबल। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये आंकड़ा 210 एंड 280 के बीच में है। इस मामले में यूएसए एंड कनाडा एंड होल यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया की हालत कहीं ज़्यादा बेटर है। अगर हम न्यू डाटा मोर्टेलिटी की बात करें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में पर 1000 पर 12 है, ये वर्ल्ड एवरेज है। इंडिया इट्स अबाउट 38, पाकिस्तान इज अबाउट 40 एंड 45। अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, तो अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ की हालत इसमें भी काफ़ी ख़राब है। यूरोपियन कंट्रीज़ एंड द अमेरिकन कंट्रीज़ आर गुड हेयर, आल्सो गुड हेयर। अगर हम रोड एक्सीडेंट की बात करें, सो द होल इस्लामिक कंट्रीज यू कैन से is facing the problem, not because of their roads are not good, because the rule are not followed by their people. So let's move on fourth goal, that is quality education. There are 10 targets and 11 indicators. Talks about the free primary and secondary education, equal access to education, technical and vocational higher education, skill increasement की बात करते हैं यहाँ पर, eliminate all discrimination इन एजुकेशन की बात करते हैं। सो और प्री प्राइमरी एजुकेशन की भी बात करते हैं। अगर प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, सो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही नहीं पहले, अब ये आना शुरू हुआ है। जिस तरह से हम देखते हैं प्ले स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, तो ये इंडिया में इस तरह से हालत इसमें पनप रहे हैं। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ एंड अमेरिकन एंड डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं वो लोग। लेट्स मूव ऑन अवर फिफ्थ गोल, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, which have 9 targets and 14 indicators. So let's discuss. Was one, empower women and girls, end of discrimination against women and girls, end of violence especially in developing countries, forced child labor, forced child marriage की बात की गई है इसमें, unpaid work एंड वर्क पार्टिसिपेशन की बात की गई है, यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की गई है, मदर केयर की बात की गई है, इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस की बात की गई है, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन की बात की गई है। सो अगर हम देखें इस पे कि
एंड ऑफ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि वुमेन्स एंड गर्ल्स, तो यूएनडीपी के अनुसार गर्ल्स को जो डिफाइन किया है उन्होंने 14 से 25 साल की अगर एज में कोई है तो उसको हम गर्ल्स की तरह कंसीडर करेंगे, वुमेन एव 25 years. So, in all type of discrimination against women means in jobs, in representation, in employment, means all types. The third one is end of violence. So अगर हम इसके मुताबिक अगर इससे रिलेटेड कुछ डेटा देखेंगे, so above 14 years अगर देखें हम सेक्सुअल एंड फिजिकल हैरेसमेंट के अगर हम केसेस देखें एक्सपीरियंस बाय वुमेन बाय देयर पार्टनर्स इन यूरोपियन कंट्रीज़ में 0 से 10% वुमेन से इसको फील किया है। अमेरिकन कंट्रीज़ 10 to 20%, African countries 50 to 60%. There are reasons because they are poor countries and they have to sell their bodies for their assets, so they are facing the problem. China 20%, India 30 to 40%, because as you know in India and Pakistan that is male dominating country, that's why they are facing the problem. Afghanistan you can see here 60 to 70%, that is very much horrible. अगर हम डेटा देखें एवरेज डेली वर्क स्पेंड और डोमेस्टिक वर्क पे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर वुमेंस जो है वो बाहर का काम करती हैं, मेल जो है वो ज़्यादातर घर का काम करते हैं। सऊदी अरेबिया में भी ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर मेट वाला सिस्टम है कि वहाँ पर मेट्स काम करते हैं। रशिया में भी, बट यहाँ पर नदर्न अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोप में एंड चाइना, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर 7 to 8 hours अ डे में वुमेन जो है वो घर में डोमेस्टिक वर्क जो है वो करती हैं, अपना परफॉर्म करती हैं। अगर हम देखें कि वुमेन CEOs ऑफ बिगर कंट्रीज़, तो नदर्न अमेरिकन कंट्रीज एंड कनाडा में ये नेग्लिजिबल है। यहाँ पर मतलब वुमेंस को दिखाया जाता है कि इस तरह से कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। अगर इस डेटा के इस हिसाब से देखें तो जो लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया, दीज आर द कंट्रीज वेयर 50 to 60% head of the policy making bodies, and the company CEOs are women. So let's move on about sixth goal, that is clean water and sanitation. There are 8 targets and 11 indicators talk about the safe and affordable drinking water, health and hygiene, water management, efficient use of water, reuse water, find out new resources of water, and uh, to support the developing countries in the problem of sanitation. Let's move on our seventh goal, that is affordable and clean energy. Target has we have 5 indicators. We have 6. Talks about accessibility of electricity, especially to developing countries. Efficient electricity, technology and research, renewable energy, or you can say sustainable energy, and it has targeted 50% of the world energy should become from non-renewable resources by 2030. अगर हम डेटा देखें तो 80% ऑफ वर्ल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है कन्वेंशनल सोर्स से। इंडिया में 65% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोल, जिसको हमें कम करना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। अगर हम एनर्जी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स से देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ बेटर हैं, बिकॉज ऑफ यूएन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करें कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए क्या फाइनेंसिंग हो रही है, तो इंडिया and Turkey are some countries which have received more than 6 billion rupees, $6 billion for the non-conventional source of energy. अगर हम विंड एंड सोलर एनर्जी की बात करें तो चाइना और ब्राज़ील
सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं. We are going to discuss the eighth goal, that is decent work and economic growth, which has 12 targets and 17 indicators. Talks about per capita economic growth at least 7% GDP per annum for least developed countries, achieve higher level of economic productivity, developing oriented policies, global resource efficiency, productive employment for women, men, and youth, reduce youth unemployment, eradicate forced labor, global strategy for youth employment. So let's see some data regarding this. So as you can see, uh, an estimated 172 million people worldwide in 2018, the data say. And as a result of expanding labor force, the unemployment is projected to increase by 1 million every year and reach 174 million by 2020. It is estimated, and I think it is more than that because of the pandemic. So now we are going to discuss goal number 9, industry innovation and infrastructure. The number of target 8 and indicators 12. So here, develop quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, increase access of small scale industry in developing countries, make industry sustainable, enhance scientific research in developing countries, and access to information and communication. So there are some data which make the picture clear. So there are 2.3 billion worldwide population lack of basic sanitation. For in some low income African countries, infrastructure constraint cut business productivity by around 40%. 2.6 billion people in developing countries do not had access of constant electricity. So let's move on our 10th goal, that is reduce inequalities. It has 10 targets and 11 indicators. Targets what rich and poor and income inequalities. So according to अगर हम इनकम इक्वालिटीज़ एंड रिच एंड पुअर को देखें तो यूएनडीपी के मुताबिक जो बेसिक क्लासिफिकेशन का आइडिया है वो ये है कि हम क्लासीफाई करते हैं इनकम के बेस पर फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड हेल्थ. अगर हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हेल्थ की जगह पर उन्होंने एजुकेशन को लिया है. सो इनकम में ये है कि शुड बी एपीएल, अब पॉवर्टी लाइन होना चाहिए. फूड में ये है कि रूरल, इफ अ पर्सन लिविंग इन रूरल एरियाज he should the access he must be the access of 24 calories physically or economically. In urban areas 2100 calories. Cloth, one time alteration in a day, मतलब उसके बाद देना सफिशिएंट क्लॉथ हो कि वो एक दिन में उसको अल्टर कर सके, तो वो अब पॉवर्टी लाइन उसको कंसिडर किया जाएगा. शेल्टर की अगर हम बात करेंगे तो 3 पर्सन, अ बेड, रूम, किचन एंड टॉयलेट. हेल्थ की अगर हम बात करें विद इन 7 किलोमीटर अ हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी होना चाहिए. सो इफ़ यू आर लैकिंग इन एनी ऑफ दीज, so you are poor according to UNDP. So 50% of Indian are poor according to this. 39.6% people poor in this world. Afghanistan and Pakistan are poor. So let's see the income inequalities. So 80% of income of world have only 7% of people.
90% of assets of belong to 3% of people. So ये जो 7% है, इनमें से 92% ग्लोबल नॉर्थ से बिलोंग करते हैं. ओके, एंड मेनली 30% एसेट्स हैविंग पीपल 19 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं. 97% ऑफ एसेट्स होल्डिंग पीपल बिलोंग टू ग्लोबल नॉर्थ. So now we are going to discuss about the 11th goal, that is sustainable cities and communities, which have 10 target and 14 indicators. Talks about access to safe and affordable housing, sustainable transport, green belt areas, sustainable urbanization and settlement planning, strength and effort to protect and safeguard cultural and natural heritage. और जो cities पर environmental impact हो रहे हैं उनके बारे में ये बात करता है. So let's see some data. In 2018, 4.2 billion people, about 55% of world population live in cities, while 2050 population expected to reach 6.5 billion. Okay. Cities occupied only 3% of land but account 60 to 80% energy consumption, at least 70% of carbon emission. 828 billion people are estimated to live in slum and number is rising. Let's move on to our 12th goal, that is responsible consumption and production, which has 11 target and 13 indicator. Talks about implementation of 10-year program for the sustainable consumption and production, sufficient management of efficient resource use, reduce food waste to half, food waste को हमें half करना है, encourage the companies to adopt sustainable 10 years policies, reduce best generation, जो best हमारा generate होता है उसको हमें recycle के द्वारा ये reuse के द्वारा उसको हमें half करना है. एंड जो 92% ऑफ वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड से आ रहा है उसको हमें कम करना है. एंड देर आर 43% ऑफ द कंट्रीज विच दे आर अडॉप्टेड दिस मेथड. अगर आप वहाँ पर खाना वेस्ट करते हैं देन यू विल पनिश्ड. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी कंट्रीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए. सो ऑन आवर 13 गोल, दैट इज क्लाइमेट एक्शन, विच हैज़ 5 टारगेट एंड 6 इंडिकेटर. टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल रेजिलिएंट एनवायरनमेंट, UNFCCC के रिकमेंडेशन को पर काम करना, IPCC की रिकमेंडेशन पर काम करना, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें क्लाइमेट के चेंज के जो मेजर्स हैं उनको शामिल करना, एंड ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना. सो लेट्स मूव ऑन अप 14 गोल, दैट इज लाइफ बिलो वाटर, विच हैज़ 10 टारगेट एंड 10 इंडिकेटर्स. टॉक्स अबाउट मैरीन पोल्यूशन, ग्लोबल फिशिंग कैचिंग मैनुअल. इसमें ये हो सकता है कि हम रोक लगा दें कि 100 ग्राम से नीचे या 500 ग्राम से नीचे मछली नहीं पकड़ सकते, उसको छोड़ना होगा. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. मरीन रिसोर्स हंटिंग जो है उस पर हमको चेक एंड बैलेंस चेक रखना चाहिए. कोस्टल इकोसिस्टम को बचाने के लिए कहा गया है. एंड जो 10% ऑफ कोस्टल मरीन एरियाज़ हैं उनको कंजर्व करने की इसमें गोल में बात की गई है. सो लेट्स मूव ऑन अपॉन 15 गोल, दैट इज़ life above land, which had 12 target and 14 indicators. 14 indicators talk about terrestrial ecosystem and reduce the degradation of biomass and biodiversity, desertification, restore land and soil की बात की गई है, genetic diversity की बात की गई है, and enhance global support to combat poaching and trafficking की बात की गई है, protect flora and fauna species की बात की गई है. So let's move on our 16 goal, that is peace, justice and a strong institution, which has 12 target and 23 indicators. Talks about reduce all form of violence, talks about basic human rights and stop discrimination in any form, and abuse, exploitation, trafficking and all form of violence against and torture against children. Rule of law की बात की गई है. Efficient, accountable, transparent institution all level की बात at all level की बात की गई है. And it also talks about ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision making at all level and provide legal identity for all की बात की गई है.
Let's move on upon last and 17 goals. That is participation for the goals, which had 19 target and 25 indicator. It mainly talks about strength, domestic resource mobilization, mobilize additional finance resource for developing countries, sharing of technology and innovation, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हांस करने की बात की गई है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और promote universal and non-discriminatory and equitable multilateral system under WTO, इसकी बात की गई है. Enhance global partnership for sustainable development की बात की गई है. And it also talks about to increase export from the developing countries, and also talk about enhance policy coherence for sustainable goals. So it's all about our SDG, Sustainable Development Goals. So the goals which started in 2015 and to be achieved by 2030, अगर हम देखें तो काम अगर हम एग्रीगेट करेंगे तो 55% से 7% के बीच में हमारा काम हुआ है, विच इज़ वेरी जो बहुत ही कम है. इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है. वी हैव ओनली 8 years लेफ्ट. हमारे पास सिर्फ 8 साल ही बचे हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए, जिसके लिए बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही फाइनेंसिंग की ज़रूरत है. मेन चीज़ जो हम लैक कर रहे हैं जहाँ पर, वो फाइनेंसिंग है. सो इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.